guys, I'm Saachee and you are watching Saachee's Creations. तो आज हम कर रहे हैं maths. One second. Today we're doing maths. I'm sorry, man. Don't say maths. थोड़ा खराब हो जाएगा आज रात में. ओके गाइस, आज मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. एंड वन मोर थिंग कि मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है साचीज क्रिएशंस. आप उसको भी फॉलो कर लो. अब देखिए मेरा एक ओह माय गॉड, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग इतनी तेज है. सॉरी बाय मिस्टेकली मैं मुझसे कुछ और हो गया. लाजिम कर रहे हैं मैथ्स का मेरा सेकंड चैप्टर. ओके, मेरी बुक का कवर पेज दिखाना पड़ेगा ना. एक सेकंड, मैंने अपनी बुक नहीं निकाली जिनमें मेरे पास पीडीएफ है. एक सेकंड. व्हाई हैविंग द बुक्स इन माय जॉब. ये रही, ये निकल गई. खुलने में टाइम ले रही है. ये ओपन कर. टेक्स्ट बुक जो है ना वो शो करती हूँ. गूगल पे मैंने निकाला. यही है मेरी टेक्स्ट बुक. आप इसी से पहचान लोगे. जिनका एनसीईआरटी होगा उनके पास तो ये बुक होगी. ये भी कुछ मैथमेटिक्स बुक्स बट दूसरी क्लास. ये वाली जो है ये क्लास वाली है बट अभी ये श्योरिटी नहीं है कौन सी क्लास की है ये. राइट, ये बस मैथमेटिक्स है. यहाँ लिखा है क्लास 6, यानी ये मेरी ही क्लास की है. ओके, सो अभी हम शुरू करती हूँ मैं. पीडीएफ क्लोज करने के लिए 3 मिनट हुए. 2 मिनट चार्ज पे बैठाया हुआ है ना, मूव करने में मुश्किल है. या तो यही है चैप्टर नंबर 2. हम चैप्टर नंबर 1 नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं. फिर सारा सीक्वेंशियल मैनर में है. Whole numbers, as we know, we use 1, 2, 3, 4 when we begin to count. They come naturally when we start counting. Hence, mathematicians call the counting numbers as natural numbers. Okay, then predecessor and successor. Okay, wait a second. ये मेरी मैम ने बनाया है. Yes. Natural numbers are the most familiar numbers. Counting numbers are known as natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5 and etc. The mathematical symbol used for the collection of natural number is n. N. The smallest natural number is 1. There is no greatest natural number as there are infinite many natural numbers. Okay guys, आपको इससे क्या समझ में क्या है?
अगर समझ में नहीं भी आया, इट्स ओके। Yeah. Mm. So our topic is whole numbers. What are whole numbers? वो आपको नेचुरल नंबर के बाद पता चलेगा. So what is natural number? Number are counting numbers. Natural number are counting numbers. Yeah, are counting numbers. Most important thing है ये. Okay. Natural number are counting numbers. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन होती है ना नेचुरल नंबर की, वो होती है काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर है. ये नहीं कि 1 2 3 4 and 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स. ये 1 2 3 4 5 तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है, राइट. ये तो इनफाइनाइट होते हैं. Am I not right? ये सारे तो इनफाइनाइट होते हैं ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1200 1000 करोड़, करोड़ से भी ज्यादा बिलियंस ऑफ नंबर्स आते हैं, राइट. बिलियंस तक से भी ज्यादा नंबर्स होते हैं. ये काउंटेबल ही नहीं है. अब काउंट करते रहो करते रहो करते रहो, कभी भी ये खत्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं खत्म होंगे. So, ये इनफाइनाइट होता है. ये नहीं है कि natural numbers are the numbers that are as 1 2 3 and infinite. ये नंबर क्योंकि इसमें 1 2 3 में 2.5 नहीं आएगा. बोलो 12.9 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा. हाँ बोलो. इनफाइनाइट में ये सब नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना. सो इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स पहले बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स सिर्फ ये होते हैं एंड इनफाइनाइट तक तो जाएंगे काउंटिंग नंबर्स, लेकिन यही होते हैं 12 50 19 200 500 12 करोड़. ये सब क्या है? ये सब काउंटिंग नंबर्स है. वेट अ सेकंड. काउंटिंग नंबर्स ये है सर, लाइक गिवन एग्जांपल्स 12 15 19 200 500 19 करोड़, राइट. इस तरह. बट अगर आप सिर्फ ऐसे नेचुरल नंबर का बिना काउंटिंग नंबर के साथ डेफिनेशन कहते हो, सो वो हो जाएगा 2.5 1 2 3 2/7 ऐसे इंक्रीज होगा. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यही पॉइंट मुझे क्लियर करने के लिए वो यूज करते हैं. ओके. सेकंड, नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स एन से, एन जानते हो ना. एन एन लेटर तो जानता है, हर कोई जानता है. तो मतलब मैथ्स में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है. ठीक है. n is natural number,
W is whole. आगे पता लग जाएगा whole numbers. आप सोच रहे हो whole numbers दूसरा नंबर but whole number के उसी टाइप के natural numbers. Okay, so next point था हमारा predecessor and successor. So as given any natural number, you can add one that and get the number and get the next number. You get its successor. Successor of 16 is 16 plus 1, 17. That of 19 is 19 plus 1, 20, and so on. The number 16 comes before 17. We say the predecessor of 17 is 17 minus 1, 16. The predecessor of 20 is 20 minus 1, 19, and so on. The number 3 has a predecessor and successor. What about 2? The successor is 3 and the predecessor is 1. Does 1 have both a successor and a predecessor? We can count. We can count the number of children in our school. We can also count the number of people in a city. We can count the number of people in India. The number of people in the world can also be counted. We may not be able to count the numbers of stars in the sky or the number of hair on our heads. But if we are able, there would be a number of them also. We can then add one more to such a number and get a larger number. In that case, we can even write the number of hair on two heads taken together. It is now for us obvious that there is no largest number. Apart from this question shared above, there are many others that can come to our mind. When we work with natural numbers, you think of future questions and discuss them with your friends. You may not clearly know the answers to many of them. Yeah. Okay, अभी मैं predecessor and successor का topic एक minute clear कर देती हूँ. Yeah, successor and predecessor. The successor of whole number is number obtained by adding 1 to it. For example, the successor of 1 is 2, the successor of 2 is 3, successor of 3 is 4, and so on. Predecessor of a whole number is 1 less than the given number. For example, the predecessor of 1 is 0, the predecessor of 2 is 1, predecessor of 3 is 2, and so on. Okay, अगर आपने ध्यान दिया हो right now, wait. अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो कि नेचुरल नंबर्स जब मैं आपको बता रही अभी ये टॉपिक नहीं बट वो नेक्स्ट ही टॉपिक है जिसमें आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ. ओके, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. तो हम पहले सक्सेसर डिस्कस करते हैं. सक्सेसर में क्या होता है, लाइक जैसे हम वन ऐड कर वन एडेड इज द सक्सेसर.
the successor. Whenever we add 1, that is the successor. Copying this one. So जैसे 1 add होता है, like 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, or 4 plus 1 is 5, right? 4 plus 1 is 5, simple, more easy, right? And so on. हाँ, क्योंकि infinite numbers इसमें नहीं होगा, वन ऐड करने पर ही होता है. After adding 1 only we can get. Then we come to predecessor. So when we talk about predecessor, what does comes? अगर successor में 1 add करता है, so predecessor में हम 1 माइनस कर देते हैं. एडिशन का ये साइन, माइनस का ये साइन, तो माइनस कर, लाइक 2 minus 1, 2 minus 1, 1, right? 3 minus 2, sorry, 3 minus 1 is 2. Yeah, like this. But 1, अगर हम नेचुरल नंबर्स की अभी बात करें, n की बात करें, तो क्या क्या कोई 1 का प्रेडिसेसर है? सो इसके लिए आंसर मैं लिख देती हूँ, नो, कोई प्रेडिसेसर नहीं है 1 का. अगर इफ नेचुरल कभी नहीं होता नेचुरल नंबर. ओके, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जिसके ऊपर ये चैप्टर है पूरा, दैट इज whole numbers. The natural numbers along with the 0 form the collection of whole numbers. Let us add one more number, I0, to the collection of natural numbers. Now the numbers are 0, 1, 2, and not. These numbers are called whole numbers. The collection of whole numbers denoted by W. The natural numbers along with 0 form the collection of whole numbers. We can say that whole numbers consist of 0 and the natural numbers, therefore, except 0, all the whole numbers are natural numbers. Fact: the number 0 is the first and smallest whole number. There are infinitely many or uncountable number of whole numbers. All natural numbers are whole numbers. All whole numbers are not natural numbers. For example, 0 is a whole number, but it is not a natural number. अब आया कुछ दिमाग में, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी? मैं ये कह रही थी कि जब मैंने n की बात की, n यानी नेचुरल नंबर्स, राइट? तो मैंने जब n की बात की तब मैंने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. पर जब मैं W की बात करती हूँ, W यानी होल नंबर्स, तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and so on. Okay,
ये इम्पोर्टेंट कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ओके, अब होल नंबर्स की बात करें तो व्हाट आर होल नंबर्स, राइट? होल, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन में जब हम वन का पहले तो नेचुरल नंबर में कोई प्रेडिसेसर नहीं था ना, नो प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर, सॉरी अभी मैं लिखूं, नो प्रेडिसेसर, वन का कोई प्रेडिसेसर था ही नहीं। बट होल नंबर्स में क्या है, वन का एक प्रेडिसेसर है, वो है जीरो। जब हम होल नेचुरल नंबर्स की सेट में जीरो ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पर जीरो आ जाए तो वो बन जाता है होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं। ओके, अब जैसे कि लास्ट में हमें पता लगा कि नेचुरल नंबर्स जो है वो तो सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन, एन डब्ल्यू। सो यहाँ पर W जो n है यानी नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स हैं, लेकिन W यानी होल नंबर्स n नहीं है, ठीक है, नॉट n, क्योंकि जीरो होता है होल नंबर्स के सेट में, लेकिन इधर जीरो नहीं है। नंबर्स के बारे में अब तो आपको थोड़ा पता ही गया होगा थ्रू द पीडीएफ आल्सो एंड समझा है उससे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब शायद मेरा फेवरेट टॉपिक आता है। Oh yeah, I remember. मुझे दूसरी वाली पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, राइट? No need of that पीडीएफ now. तो what is a number line? Next topic जो है वो है number line. And we don't need this PDF also क्योंकि उसमें भी same चीजें ही हैं. To draw a number line, follow these steps. Draw a line and mark a point 0 on it. Now mark the second point to the right of 0 and label it as 1. The distance between 0 and 1 is called the unit distance. Now you can mark other points as 2, 3, 4 and so on with unit distance. This is the number line for the whole numbers. Facts related to number line: the distance between 2 points. The distance between 2 points. The distance between any two consecutive whole numbers is always 1 unit. Sorry. Only 1 unit is there. The distance between 3 and 5 is 2 units. Likewise, the distance between 1 and 6 is 5 units. 1 and 6 is 5 units. The greater number on the line. The greater number on the line. The number this is not coming up. Selecting नहीं sorry, but select नहीं हो.
The number on the right is always greater than the number on the left. Okay. A smaller number, the number on the left of any number is always smaller than the number, as the number 3 is on the left of 7, so 3 is smaller than 7. Addition and number line. If we have to add 2 and 5, then start with 2 and make 5 jumps to the right. As our fifth jump is at 7, so the answer is 7. So the sum of 2 and 5 is 2 plus 5 equals to 7. 2, 2, 3, 4, 5. Here we are going to go backwards. If we have to subtract 6 from 10, we needed to jump from 10 and make 6 jumps to the left. As a 6th jump is at 4, so the answer is 4. The subtraction of 6 from 10 is 10 minus 6, 4. This much. Okay, so let me stop sharing. Let me take my पीपीटी के थ्रू भी आपको वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, but still I will tell you. So यहाँ पर what is the number line, तो आपको पता लग गया होगा ये है लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Simple. हो गया? ये होती है आपकी नंबर. This is only a number line. ओके, जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा था कि छोटा बड़ा, तो यहाँ पर 0 राइट में है, फिर लेफ्ट में है, तो 0 के राइट में कौन सा नंबर है, वो है 1, तो 1 0 से बड़ा. 3 के लेफ्ट में कौन, तो 3 7 से बड़ा है या छोटा. अगर 3 के राइट में 7 है, यानी वो 7 बड़ा है, 3 छोटा हो गया. 7 से 1 बड़ा है या छोटा. 7 राइट में, 1 लेफ्ट में, तो 1 क्या हुआ, छोटा हुआ. अब एडिशन लिखनी बात, एडिशन हम कैसे करेंगे. हम एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 4 प्लस 13. 4 प्लस 13. तो इसको करने के हमारे पास कितने वेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर नहीं जानते, 2 वेज है करने. फर्स्ट मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ ताकि प्राप्त करने की इजी हो जाए. ऐसा आपको 13 जम्प्स 4 से लेकर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक 13 जम्प्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कहाँ गया 17. अब आप यहाँ से एडिशन कर लो.
4 plus 3 is simple. ऐसे भी simple solution है. Surety. नहीं करिए थी बात. इस तरह से जंप मार के आप जब लेफ्ट को जाते हो तो आपको हायर नंबर यानी एडिशन. अब सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन. So subtraction. Number लेते हैं plus minus 4. So 3 plus minus 3. So 12 से jump, jump and jump into 9. Right? But 12 minus. I'm sorry, but 12 minus 3 is clearly 9. I did something wrong. गलत हो गया. मैं कुछ और सोच रही हूँ. कुछ और गलत. Wait a second. So guys, ये नहीं हो रहा है ये. इसलिए मैं फिर आपका 11 बजे वापस से मुझे कर दूँगा. अभी मैं चालू करके एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं गलत लिख रही थी यार 10 पर. बार बार मेरे दिमाग में से 10 10 10 10 चल रहा है. और ये 10 को कर दिया. 10 कर दिया. ओके. Now what we need to go for multiplication. आपको मैं मल्टीप्लिकेशन की पीडीएफ दिखाऊंगी. पीडीएफ के साथ ही साथ मैं आगे भी कर दूंगी. एक जैम बोर्ड में खोल लेते हैं. रुको एक जैम बोर्ड नहीं, जम बोर्ड. जम बोर्ड. I opened adding more jam board today. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. आई एम श्योर. सो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ. मुश्किल से लिख पा रही हूँ. So see one second. Charge it down. Yeah. So first of all यहाँ लिखेंगे multiplication. Multiplication. Multiplication on number line. On number line. Or wait a second. Addition on number line. मैं इसलिए और easier बना देती हूँ.
subtraction. On number line मैं एग्जाम्पल शो करने वाली हूँ. And multiplication on number line. Then आपको once more मैं बाद में explain करूँगी हूँ. I'm sorry with that, but all numbers. Okay. So यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक वो भी डाल रही हूँ, like natural number क्या होता है. बाद में कर रही हूँ तो natural numbers whole numbers. Then I'm sorry, spelling mistake हो सकती है, लैपटॉप पे मिस्टेक्स हो ही रही है मेरे से. एक्चुअली बना नहीं पा रही हूँ ना अच्छे से. Predecessor and successor. Predecessor and successor. So एडिशन जैसे मैंने आपको बता दिया था. So यहाँ से आपने पहले लाइन खींचनी होती है और शेप्स बनाने का होता है. लेकिन मुझे हो नहीं रहा है आज. मैं जैम बोर्ड मेरा कितना अच्छे से करती थी. एक हो गया काम. या डन. बहुत अच्छे से हो गया इस बार तो. एक सेकंड.
Yeah, guys. Yeah, the additional number दिख रहा होगा ना? Yeah, guys, I'm back. So yeah, I added 3 pictures right now. Additional number line. Addition using number line. जैसे कि मैंने आपको शो किया था, ये वही है. Just the same, but examples हैं. These are the few examples for you. Same here for subtraction on number line. Same here for multiplication on number line. Now you would be thinking of multiplication कैसे करेंगे? If we have to multiply 4 and 3, then start from 0. Make 4 jumps using units. At make 4 jumps using 3 units at a time to right as you reach 12. So we say 3 into 4 is 12. Right? See. Yeah. Now the 2 examples are 3 के हैं, 2 के हैं. The natural numbers repeated. Counting numbers are natural numbers. Natural numbers are denoted by n. There's no greatest natural number as there are infinite many natural numbers. 1 is the smallest natural number. Whole number, let me do it a bit bigger. This is whole for whole numbers, and this is for predecessor and successor. Okay, ये हो गया. अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं. Oh my god, I didn't know. Addition on number line, yeah, few examples. This is subtraction, this is multiplication, and natural numbers. Whole numbers actually recording तो ऑन थी लेकिन शेयर स्क्रीन पॉज थी. स्क्रीन मेरी पॉज हो गई थी. ये रही आप लोगों की. Yeah, fine. Okay, next predecessor and successor. Okay, right now तो हमने इतना कर लिया. आगे चलते हैं. Next is properties. अब मैं और शेयर स्क्रीन नहीं करूंगी, मैं यहीं पर समझाऊंगी. Closure property. Whole numbers are said to be closed if their operation is also a whole number. For example, addition. Whole numbers are closed under addition as their sum is also a whole number. For example, 2 plus 7. 2 plus 5 equals to 7. Yes? Closed or not? Yes. That is closed. Sorry. Subtraction. Whole numbers are not closed on the subtraction as the difference is not always a whole number. 9 minus 2 equals to 7. 2 minus 9 equals to minus 7, which is not a whole number. Whole number are closed under multiplication as their product is also a whole number. Yes, because 9 into 5 is 45. Whole numbers are not closed under division as the result is not always a whole number. 5 divided by 1 is 5. 5 divided by 2 is not a whole number. यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है. यानी जब आप अब आपको स्टिल एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर लेना और एक्सप्लेनिंग. तो 2 plus 5 is 2 plus 5 कितना होता है? 7, right? But
2 minus 5 तो कम हो जाएगा ना, है ना, कम हो जाएगा वो. Then 2 into 5 is 10. 2 divided by 5 अब नहीं होगा. यहाँ पर होल नंबर आया, but ये दोनों में होल नंबर नहीं आएगा, आएगा ही नहीं. हाँ, हो सकता है 5 minus 2 में आएगा 3, लेकिन हर किसी केस में होल नंबर आएगा तभी होगा. ओके, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी. ऑपरेशन करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो होल नंबर होना चाहिए. ओके, वो होल नंबर नहीं हुआ यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, सिंपल है, सबसे इजीएस्ट है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये two whole numbers are said to be commutative if the result same as even if we swap the numbers. Okay, sorry, क्या करूं, गलत हो रहा है बाय मिस्टेक. again sorry. yeah, तो यहाँ पर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 2 plus 5 5 plus 2 equals to 7 and equals to 7. दोनों का आंसर क्या है? सेम, सेम ही होना चाहिए. ये हो गई कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन का चेक करें तो 9 minus 2 equals to 7, but 2 minus 9 equals to minus 7. यहाँ पर आंसर सेम नहीं आया, this is minus, so this is wrong. As same as well, multiplication also, 2 into 5 is 10, 5 into 2 is also 10. Same numbers again. When we do for like 1 second, the number, yeah, then when we do 5 divided by 1, answer is 5. But when we do 1 divided by 5, answer we don't know. I also don't know. So this is wrong and this is right. As यहाँ पर same ही answer. Okay, next property is associative property. Associative property. So the two whole numbers are said to be associative if the results remains the same, even if we change the grouping of the numbers. Okay, like 3 plus 2, 3 plus 2 plus 5 equals to 3 plus 2 plus 5. ब्रैकेट में चेंज कर दिए तो 3 plus 7 equals to 5 plus 5 equals to 10. Simple. Yeah or not? Yeah or not? Simple. I'm just going to stop my script. Like it was 3 bracket 2 plus
5, right? This was the question there. This is the question. So here, if we change it to 3 plus 2 in bracket plus 5. So it would be 3 plus 7 equals 2. Or another way, 5 plus 3 inside the bracket plus 2. So 8 plus 2 equals 10. Simple, easy. पर जब हम इस चीज को सब्ट्रैक्शन से ट्राई करेंगे तो वो नहीं होता आफ्टर स्वैपिंग same as in division and multiplication में हो पाएगा. I'm not sharing time waste हो जाएगा. और then again choose last ones. This is the most important one. Distributive property. This property says that if we have three whole numbers, for example, x, y, and z, then x, y plus z equals to x, y plus x, z also. Example, for example, evaluate the numbers. 100 minus 1. So that into 100 equals to 5895 into 1 minus, I'm sorry, yeah, and 1. Yeah. So as if आपको जरूरत पड़ी कभी, आपको इतना ही हार्ड नंबर दिया जाए. For example, 2, 3, and 9. Okay. 2, 3, 9 into 2, 3, 9 into 99. आपको ये नंबर दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको जरूर टाइम लग सकता है, राइट? So what you can do is equals to डालो 239 into bracket में 100 minus 1 कर, क्योंकि 99 वही होता है, ब्रैकेट में 100 minus 1, then equals to 239 into 100 equals and plus, sorry, 1 second, I'm doing something wrong. Yeah, then minus, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है. अगर यहाँ आपको दिया होता कोई और नंबर तो आप एडिशन का साइन भी लगा सकते हो. यहाँ पर ब्रैकेट में कोई भी साइन आ सकता है, डिवीजन हो सकता है, ब्रैकेट में कोई भी साइन आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, सॉरी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, या फिर वो भी आ सकता है, एडिशन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, माइनस करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, देन आगे यहाँ पर लिखेंगे 239 into 1. यहाँ पर हम इससे तो 100 से तो इंटू करेंगे ही, 1 से भी इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई. सो आंसर क्या होगा? 23900 minus 239. क्या? अब आंसर आप निकाल लेना. minus 239. सिंपल, आंसर निकाल लेना है. फिर हमको जो आंसर आएगा हमें उससे निकालना है. And your answer is there. One second.
मैं कुछ और कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ यहाँ पर। बड़ा वाला है ना तो मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने कैमरे को मोड़ लिया है। कौन सा? डन। मल्टीप्लाई करने से तो हो गया, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा मुझे थोड़ा। मल्टीप्लिकेशन में भी आपका फिर आप ही का टाइम निकल जाएगा। लेट्स चेक इन द कैलकुलेटर। So what's the number? 239 into 99, 23661. Same answer. Okay, I told you same ही आंसर आएगा। ये वे उससे ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके। ओके ओके गाइस, this much for today. One second. Cancel और कितना बच्चे क्या क्या? Yeah, identity of addition, ये सारा तो पता ही लगेगा। If we add 0 to any whole number, the result will be the same number only. 0 is the additive identity of whole numbers. Okay. Identity for multiplication. 5 into 1. If we multiply 1 to any whole number, the result will be the same whole number. So 1 is the multiplicative identity of whole numbers. Okay. Patterns. Patterns are used for easy verbal calculations to understand numbers better. We can arrange the numbers using dots in elementary shapes like triangle, square, rectangle, and line. We can arrange, one second, arrange every number using dots in a line. We can arrange every number using dots in a line. I'm sorry, I repeated. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5. We can arrange some new numbers using rectangle like 6 and 12. We can arrange some numbers using square like 9, right? 16. We can arrange some numbers using triangle 3, 6, and 9 and all. Use of patterns. Patterns can be used to simplify processes. For example, 123 plus 9 equals to 123 plus 10 minus 9. That would be now 133. That when we minus here 1, we get 132. Yeah guys, back. यानी यहाँ पर आपने देखा होगा यूज ऑफ पैटर्न्स, यानी ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे भी वही है। तो यही है, इतना ही आपका चैप्टर है।
So you patterns can be used to simplify the processing. How I will tell you. Yeah. So what we need to do one second. So here what we need to do is like first of all हम कभी numbers ले लेते हैं जो कि हम 9 से माइनस प्लस 18 प्लस 9 अगर आप नहीं कर सकते so what you will do is 18 plus 10 minus 1 ये आपके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है अगर आपके लिए ये चीज हार्ड है तो ये आपको इजी कर देगा so 10 minus 1 as so what we will do then 18 plus 10 equals to what is 18 plus 10 बताओ 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 that would be 28 right now, once. Yeah, 28 you're not right 28 आ जाएगा आंसर आपका simple then equals to 28 28 minus 1 equals to 27 so 18 plus 9 is 27 the answer here comes 27 simple यहाँ तो मैंने आपको इजी नंबर दे दिया नंबर कुछ भी हो सकता है 1500 1056 कर पाओगे आप बोलो ये भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर 1056 plus 10 minus 1 bracket so what we will do here 1056 plus 10 equals to 56 plus 10 equals to कितना होगा 66 right here 1066 so 1066 minus 1 equals to 1065 so 1065 is the answer simple easily हो गया tell me now wasn't that easy यहाँ पर इजीली हो गया ये देखो अब चाहे जितना भी हार्ड नंबर हो प्लस 10 करना तो इजी होता है राइट आप ऐसे ही और वेज कर सकते हो 10 minus 1 के जगह और भी वेज होंगे राइट इसी की जगह और भी वेज होते हैं आप वो ट्राई कर लीजिए ओके गाइस this much for today tata bye bye मेरे दूसरे चैनल्स को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना बाय बाय